This is Audio Gyan, and I am your host Kedar Nimkar. Welcome to a deep dive into the minds of luminaries from the Indian creative world. If you want the truth, I'll tell you the truth. Listen to the secret sound, the real sound, which is inside you. Kabir. Today we have such a person with us on AudioGAN who's not only heard his inner voice but also share himself as a work of art. He happens to be born in and raised in Kashmir. Would his work of art be any different if he was born or raised anywhere else in the world? Pleased to have Mohammad Muneem Nazir with us on AudioGAN. He's a poet, songwriter, singer. His artist name is Alif. He's a winner of the IRAA award for his single Life Like a Sufi and Dada Saheb Phalke award for the single Lal Nawat. He conceptualizes and directs Alif's videos. Muneem teaches Urdu poetry, songwriting at Symbiosis College of Arts and Commerce in Pune and also conducts various poetry, songwriting workshops. Thank you, Muneem, for giving your time, and it's a real pleasure to have you on AudioGAN. Thank you, Kedar. It's a pleasure to be here and have a conversation that I think will be really interesting. Yes, thanks. And obviously, अगर आपको स्टार्टिंग में कुछ डिस्क्लेमर देना है, क्योंकि हमारी जब पहले बात हुई थी बहुत दिनों पहले कि एक रहता ना, like you don't want to sort of come across as like an authority on poetry or anything. Any disclaimer just for like our जनता who gets whatever, like वो कहते हैं ठेकेदार नहीं है, आप बता रहे थे. जनहित में जारी है. मैं किसी चीज का ठेकेदार नहीं हूँ. जो मेरे मामले है, जो मेरे मसले है, वो मैंने गलतियों से सीख रहा हूँ और बारहा कोशिश करता हूँ कि मैं गिर के उठूं फिर वापस गिरता हूँ. मतलब it's not necessary that you have to consider what I have to say will work for you, but in the situation that I had been in that particular time, I did that. Sometimes it worked, sometimes it did not. Correct. Yes. So you started on a great philosophical note, and I'm hoping that this conversation will be a little philosophical because it involves poetry, which I'm not an avid reader, but definitely थोड़ा सा कदरदान तो हूँ. कबीर पसंद है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो let's see how it goes. But मैंने जो कवि हैं जो मुझे पसंद है, ऑब्वियसली मानव कॉल के साथ एक एपिसोड किया था बहुत दिनों पहले, बहुत सालों पहले, और वरुण ग्रोवर भी आए हैं, तो उनसे कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस थे, उनको पूछे गए वापस कुछ क्वेश्चंस रिपीट हैं, और other podcast wherever I've heard, I think I have some questions for you which is in and around poetry, life of a poet, thoughts of a poet. So I'll start off with like a more basic question, which is like, who according to you is a poet? Or maybe like, yeah, we can start there and open up more questions as we go along. I remember when we had this discussion, who according to you is a poet, I remember thinking of who according to you it should be, and it could be who according to you is an artist or as a creative person, because हम अक्सर ऐसे कहते हैं कहीं पे भी हम जाते हैं कि अगर हम सिनेमा देखते हैं या we see a painting or we see something which is extraordinary, you know, be it words or dress or like an art, or even sometimes it has been used as an adverb and verb and to describe a performance in a sports field. We say that, oh, you look like poetry. That was poetry in motion. That was like falana in motion, falana dimkana, but everything. But ऐसा तो ऐसा क्यों कहते हैं? Why is it that people think of poetry in such a way? The question I rather would say ki, who according to you is an artist who accepts all these things when he or she is expressing themselves in a particular way. Does it transcend? Does it make a transition for you to feel, imagine, and
be transported into something else, which is what happens. For example, if you see Messi play on a field, you're transfixed. आपका ध्यान वहां रहता है, आप कहीं और पहुंच जाते हैं, मतलब आपको सब इर्द गिर्द भूल जाता है. So that's poetry in motion playing. आप I'll straight away go to the vein of the heart of Mr. Ghalib, for example, when he says कैदो हयात बंदो गम असल में दोनों एक है, मौत से पहले आदमी गम से नजात पाए क्यों. So what it means, जिंदगी कैद और बंदे का गम, the fact that he will have problems and the fact that the prison of life actually are one and the same thing. And when it's one and the same thing, why does मौत से पहले आदमी गम से नजात पाए क्यों, कि मरने से पहले उसको गम से नजात क्यों मिले. एंड जब ये आप सुनते हैं, ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. ठीक है. या आप देख ले, उनके गालिब का ही है, उनके देखे से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है. तो when you listen to these things, it transports. When you listen to a song, or like I haven't found, or Queen, We Are the Champions, or you watch तारकोविस्की की कोई फिल्म देखते हैं, आप सिनेमा देखते हैं, बीट चेन्नई एक्सप्रेस और हैप्पी न्यू ईयर, और as deep as Lighthouse, maybe some नोलन की कोई फिल्में हैं. आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं अगर किसी आर्ट फॉर्म में वो ज़र्फ है, वो कुव्वत है. I think that's poetry for me. For example, if I do something, if it transports you from one state to another state, maybe emotionally or whatever, I think that is what is poetry for me. It has to transport you to something else. It has to make you feel that you are in a transition phase. But do you think that the transposition or whatever, like the moving to another place, is in a stricter sense, or it could be just introspection? Because a lot of times it happens, right? You go in a trance, but you are actually, like, there are, like, आशीष अभिकुंठक की कुछ फिल्में देख रहा था, तो he was telling, in fact he was on audio again, वो बता रहे थे कि I'm more interested in knowing what happens to the audience rather than what is happening in the film. So you direct in such a way where you are almost in an introspection zone. Is it that? So for me, honestly, it's like a fluid for me. For me, when these things are out, what it does to other people, I have no control of that. I have absolute no control of that. And if I want to control that, मुझे बहुत एंजाइटी होगी. मतलब मैं कंट्रोल करूंगा कि उनको पसंद आए ना पसंद आए, या ये वो वैसे एब्जॉर्ब करे कि मैंने फलाना लाइन पे फलाना लफ्ज लिखा था और फलाना मीनिंग उसका ये था, कि उनको वो समझ आ गया कि नहीं आ गया. तो अगर वो मेरा परसेप्शन है कि मैं घबरा जाता हूँ. अभी जैसे मतलब लाइक शेर है कि अभी हसास है दिल भरोसा कैसे करे, अभी हसास है दिल भरोसा कैसे करे, बनेगा संग ये जबी तब के तब प्यार करो. अब ये मैंने कह दिया. अब जितने भी सारे लोग, for them to perceive it in a way where the way I've written it or it came to me, they have to first understand the vocab of hasas. Okay, मैंने हसास के मतलब होते हैं सेंसिटिव. ठीक है. और संग के माने होते हैं पत्थर. ठीक है. अब now I will read it again to you and then let me ask you, does it make any sense to you? अभी हसास है दिल भरोसा कैसे करे, बनेगा संग ये जबी तब के तब प्यार करो. Yeah, it sort of, yeah. I don't do anything. I just gave you hasas is equal to sensitive, sang is equal to stone. So you make sense out of it, my dear. Yeah, whatever it is. It seems a bit contradictory at a face level, but yeah, it's up to the, what you're saying is
the interpretation of it is like you want to stay away from it. It is yours. वो बड़ी बड़ी I think I absolutely agree with that. If you decode love, or if you decode poetry, if you decode the magic, it's not magic anymore. Beautiful, beautiful. Yeah, I think you beautifully articulated. Yeah, and then do you think? I mean, that's sort of poetry that means to you, but you referred Galib, and we spoke up, like I started off with Kabir. So do you think that these two entities, poet and the poetry, can be decoupled, or it's just a manifestation of everything that a poet sort of goes through, or observes, or I happens will again around? I will again come back to, can the artist and his art be decoupled? Because for me, the art and the artist are the primary thing. The artist could be a storyteller, but still poetic. An artist can be a footballer, still poetic. An artist can be a cameraman, still. So art and the artist. So if you could decouple it, there are pros and there are cons of doing that. And it's absolutely perception and the magic of choice. And that's where things go little, sometimes south, sometimes north, because uh, it's like आप जितना डीप जाओगे चीजों में, जितना सरफेस के अंदर जाओगे, उतना आप पे लंग के ऊपर प्रेशर पड़ना ही है. ठीक है. ये है कि या तो आप ट्रेन करो अपने आप को कि पहले 10 मीटर नीचे जाओ, फिर 15, फिर 20, फिर 50. बहुत एकदम बढ़िया. अगर मीटर नीचे, तो पानी का प्रेशर आपके फेफड़ों पे इतना आएगा दोस्त कि हो जाएंगे आप. तो ये वो ट्रेनिंग का मामला है. दैट इज वेयर ट्रेनिंग कम्स. दैट इज वेयर, खासकर आजकल के दिनों में. और लेकिन डाउन साइड ऑफ इट इज कि अगर आप नीचे नहीं पहुंचे, तो गोता मार के आप वो हीरे निकालना जो है ना, वो कभी कभार मुश्किल हो जाते हैं. These are only choices. Somebody can be a great swimmer like Michael Phelps. Surface पे he's killing it. Okay, he's amazing. And sometimes people who are swimming and in the deep thing, they sometimes want to be there at the surface, and people on the surface, they want to be deep down there something. So there is no right, there is no wrong to it, but everything, वो कहते हैं ना, the grass is greener always on the. तो जो मेरे पास है, अमूमन मुझे लगता है कि यार कम ही है यार, मतलब वो हो जाता तो अच्छा हो जाता. लेकिन आपको अपने आप को ट्रेन करना है कि आप जब ये चीजें कर रहे हैं, आप कैसे इसको हैंडल कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेरा ये मानना है कि अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन गालिब आजकल के जमाने में हुआ हो, मतलब जिंदा होते, या मीर तकी मीर साहब, मैं गालिब के बारे में ज्यादा कहूंगा, and he would have been in Bombay, and he would have felt all these things in his heart and soul, and this stress, life, wine, uh, being being disassociated, abandonment issues from the God, his 7 children born dead, and one not make it beyond 7 year old. His life. Imagine if he would have booked an appointment in BKC with a therapist. Hypothetical मैं कह रहा हूँ. Imagine he would have appointment with a therapist in BKC. वो उनके पास जाता, वो बात करता, game over. Galib has found a way to heal. You know, he has figured it out. Out going in that abyss. You know, अगर उसको वहां पे थेरेपी मिल गई होती, तो वो सवाल जो वो पूछ रहा था, उसका जवाब शायद मिल गया होता उसको. लेकिन जमाने में शायद वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था मेंटल हेल्थ का. इसलिए आप देखिए, जैसे गालिब अभी तक मकबूल क्यों है. मतलब वो जमाने के शायर जो है, उनको ऐसा क्यों कहा जाता है, और आजकल के जमाने में भी ऐसे शायर क्यों मकबूल है, जो ऐसे ऐसे लफ्ज या ऐसा ऐसा करामती
करामती चीजें लिखते हैं कि हम्म, लोग बोलते हैं ये तो मेरे लिए लिखा है, मतलब वो हम्म, एकदम देता है उनको, हम्म, क्योंकि देयर इज नो राइट, देयर इज नो रॉन्ग, बट it is only the choice that you make, and I believe that choice is only yours, only yours. As a Nobody can. creator. As a creator, as an artist, the choice is only yours. What is your direction? You want it to be liked by audience, one. You only want to express yourself and share a piece of yourself, two. You want a bit of both, fair enough. Or sometimes you want to write something which is commercial, which is absolutely okay. हम्म, ऐसा है कि fans get hooked on to a certain version of an artist, and then when he changes his artistry or his style of doing things, he often faces rejection. But mere liye it doesn't give me any high if I can't take risks, if I हम्म, can't sing different form of art forms. I want to be sing a song like Aladdin, which is one of the songs in my set, and I also want to be able to sing a song like Malal, which is हम्म. also in. So that is my DNA. That gives me a feeling of I'm alive. Got it. But I'm little taking a digression of the script is that मैं थोड़ा बहुत कुमार गंधर्व भी सुनता हूँ, तो कुछ Mhm. कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो परफॉर्मर बोले जाते हैं ज्यादातर, क्योंकि वो ऑडियंस की नफ्स देख के, ऑडियंस का लाइक सॉर्ट ऑफ बिल्कुल, इंक्लिनेशन देख के दे परफॉर्म, मे बी रिपीट बिल्कुल. रहता ना, लाइक हाँ आप बताइए क्या सुनाएंगे आप, एंड देन दैट हैपेंस राइट, एज अपोज टू एंड like a Kumar Gandharv who sort of, yes, to a certain extent there is this feeling of pleasing someone, but still the art side of, or the expression side of, is so like oozing out constantly that they just dismiss the audience and sing for themselves or sing for something higher than them. And तो ये दोनों केस में कुछ पता नहीं, लाइक आप सही जवाब सही गलत का लाइक आपका डेफिनेशन ही आपने पहले एस्टेब्लिश किया, बट फिर भी लाइक इज देयर मोर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर टाइप, इफ Okay, or I'll I'll give you an ideal scenario. When I just did a set. I was in Goa. I just did a solo set there, and I was in front of 100 people who were absolute high end corporate people. Okay, they didn't know the language that I'm singing in or performing in. One, two, they uh, around 95% of the people might not have heard what the kind of music I do, okay, the kind of work I do. But why was it thrilling? Is because I always feel that, like you said, the inclination is more that, of course, they are honoring me by standing in front of me or sitting in front of me. They have bought tickets, they have uh, been called for, and I've been called for an evening to give them something so that they can take back home. Because I feel, music is something that people can take back home. Words they can take back home. A cinema is a difficult thing to take back home, because cinema while driving you cannot, while sleeping you cannot, but words you can take back home. So when I was there, so it was an honor to be in front of them and share my work in a way which is palatable. It's like, how do I present it? अगर मैं थाली में हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं डेजर्ट कब डालता हूँ, मैं तीखा कब डालता हूँ, मैं बीच में क्या डालता हूँ. क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी कभार बीच में कहते हैं इंसान, अगर तुम्हारा पैलेट चेंज करना है तो मूली खा लो थोड़ी सी ना, मतलब लाइक, ताकि आपका जो जायका है वो न्यूट्रल हो जाए. तो किस गाने से मुझे वो प्लेन करना है, किस गाने के बाद क्या करना है, किसके बाद क्या कहना है, कौन सी पोइट्री, कौन सी लाइन कहनी है. सो दैट इज समथिंग दैट कम्स विद experience of making mistakes. Start a set, I know what I want to start with. In middle, I want to make friends, and in the friends, I want them to sing along.
have fun. When they're my friends, I want to give them something a little more intense so that they can absorb it. And then I get them back again to have a little fun. And then in the end is something I share, which I want to share with them. It's like, that's why I'm here. Yeah, it's so amazing. In fact, then I have a follow-up question which was actually coming later, but then I'll put it right now here. So in the context of your song Lalnavat, let's take that as an example. When I saw it, there I found it that there could be multiple takeaways from it. Like there is pain, there is something undercurrent. So if you leave that to the audience, as we spoke earlier, are you consciously trying to abstract it at a level where there is some takeaway, or it just again of it just an expression which is coming very instinctively, or through intuition, or just like, then why the need for making it palatable also? So Malal, Lalnavat. Usually when we are doing set, Malal and Lalnavat are like brother and sister songs. Okay, we finish Malal, immediately we start Lalnavat. Okay, because I am ready to do Lalnavat more efficiently when I have just done finished Malal. Okay, Mm. and when I do that Lalnavat, I am sharing a piece of information that I believe with audience. Sometimes it makes them uncomfortable. Sometimes it Cry, doesn't. maybe. Yeah. Yeah, and sometimes people may leave. Sometimes they feel, well, this is not me, or something else. But immediately after Lalnavat, because towards the end, Lalnavat little it goes little. It has couple of notes which is like more like a cry towards Mm. the end. If you might have heard the song, they're Yeah. more like so it becomes overwhelming, not just Yes. for me too. So it is my responsibility कि अगर मैंने वहां पे उनको लेके गया हूं मैं, तो वहां से कहीं से हाथ पकड़ के अपने आप को भी और उसको वहां से लाऊं, और उसके लिए बाकी सारे गाने बनाए गए हैं. Mm. You Got. this is a craft. This is also a skill. That is, if creativity is creativity, there are some tangible ways and rules to express it. Mm. And those rules, मैं कहता हूं अमूमन, कभी कभार मुझे लगता है, आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू एड्रेस दैट, इज लाइक दोज रूल्स. कभी कभार ठेकेदार बैठते हैं कि यही सही रूल है, Mm. कि ये ऐसे ही हो सकता है, ये ऐसा ही होना है. आप समझ रहे हैं मेरी बात? Mm. तो ये ऐसा ही होना है, ये ऐसा ही होता है का मामला जो है, ये करने वाले पे डिपेंड है ना. जो करेगा वो डिसाइड करेगा ना कैसा होता है. जिसने Mm. वो तो सोचेगा ना, हाँ शायद ऐसा होता है इसलिए मैं नहीं कर सकता हूँ, शायद ऐसा हो सकता है, ऐसा. घुसो तो सही, लाइक गेट इनटू इट, मेक Correct. सम मिस्टेक, mess up. आई थिंक दैट इज वेयर, बिकॉज ऑफ दिस ठेकेदार जो रहते हैं, वो कभी कभार डरा डर जाता है आदमी. सोचता है Mm. कि यार, ओ यार, मैं इतना स्पेशल नहीं. मैं I'm not born with it, because I remember having this. I was on in a conference in Kabul once, and the conference name was Arts and Tolerance, and how art helps you to tolerate everything in life. And I remember one gentleman saying that you're born artist. ठीक है? तो Mm. मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ ऐसे. 20 मिनट के बाद दोस्त, मेरा दिमाग खराब हो गया. मैंने बोला, no man, we're not born. Maybe you're Mm. born art. I was not born as an artist. I felt comfortable in the skin of artist. That's why I chose it. Otherwise, I had done my engineering, I had done my MBA. It was my choice. And when it became my choice, I had to work my Yes, I got it. Mm. Mm. hard to acquire that. To acquire Mm. that.
फर्क सिर्फ इतना है कि somebody who is naturally talented, you know, born with a special gift, maybe 100% he will take 5 hours or 1 hour to do the same thing. But somebody who has to acquire it, he will take 50 hours. Hmm. ठीक है ना, to reach there, maybe 100 hours, maybe 500 hours, maybe 10,000 hours. But वो वक्त 10,000 घंटे या नहीं देने या देने हैं, वो कौन डिसाइड करेगा? वो आप करोगे ना, सामने वाला Hmm. क्यों बट ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल एरिया में जाएगा, विच इज माय फेवरेट क्वेश्चन, विच आई हैव बीन ग्रैपलिंग विद फॉर वेरी लॉन्ग. आपने जैसे रूल्स बताया, राइट? डिसाइड? तो एक वो भी स्कूल है ना जहाँ पे यू नीड टू नो द रूल्स टू ब्रेक द रूल्स. बट अगर एब्सोल्युटली. हम बट देन इफ यू गो हेड ऑन चैलेंजिंग एवरीथिंग, देन हाउ वुड लाइक क्या होता You है said वो? it. You said it right. You have to know rules to break it. It's like a simple thing like uh, you have to know how to sing in key in sur to able to sing हम्म. anything. And हम्म. आप बेसिक आपके कुछ नहीं कहा सकते, तो आपका बेसिक तो सही होना चाहिए ना. आई एम See, that is where context come. I am understanding and I am placing this baseline that everybody who wants to do art, they know the basics, right? For example, हम्म. अगर आप गायक गायक बनना चाहते हैं, आपका सुर लग रहा है, आप सा का सा कर रहे हैं. अब कितना लग रहा है वो रियाज पे डिपेंड करता है, नंबर एक. आप गिटार बजा रहे हैं, कितना गिटार बजा रहे हैं वो रियाज पे डिपेंड करता है. फिर अगर आप शायरी कर रहे हैं, अब शायरी में जैसे मतलब लाइक शायरी में ये काफी काफी बारीक लाइन है, और मतलब there's a बारीक लाइन भी है and there's a defined definition at the same time. It's like who calls poetry what is poetry, especially in the form of when it's Hindustani. मतलब अगर हम्म. आप लिख रहे हैं तो गजल सही माने में गजल क्या है और सही माने में प्रोज क्या है. अब अगर आप गजल के देखेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि इट हैज टू हैव mathematical balance. हम्म. It cannot not have that mathematical balance to for it to be called a ghazal. For example, uh, um, uh, uh, simple example I'll give you. गालिब साहब की गजल है ये हजारों ख्वाहिशें ऐसी ले सकते हैं आप. हाँ ठीक है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले बहुत ऐसे ऐसे. अब for the mathematical part of it, let's try and decode the mathematics of it. So the mathematics of it is in the formula of mafa'ilun 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 mafa'ilun. अब आप बोलिए मफाइलुन क्या है? हम्म. मफाइलुन is actually a sound, ahang है वो. It's and this meter is called hajaz. Okay, it is one of the first uh, meters that was I would say discovered or placed by uh, I believe a mathematician and a poet in I don't Persia or Arabic side. I'm not sure about that, but this guy, he decided to have these things in place, and this is nothing but meter. अब मैं कहूंगा कि मफाइलुन का sound is छोटी आवाज बड़ी आवाज बड़ी आवाज बड़ी आवाज, 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 एक लाइन. और यही जो मामला है कि ऊपर का जो मामला है वो नीचे भी होना चाहिए. अब आप इसको डिकोड कैसे करेंगे? अभी डिकोड हुआ, फॉर एग्जांपल that's where I do my workshops in of Sarira Khama. you know I may just, if somebody picks it up, uh, you know I'm just sharing an exercise right now. So it's like a हम्म. simple thing. It's like तना दुम दुम तना दुम दुम तना दुम दुम तना दुम दुम. अभी हम्म. क्या है? जैसे के दार, के हम्म. is a, how do you say kedar? Can you say या केदार. kedar, right? So या. it's ke, लंबा आवाज, दार बड़ा आवाज, ठीक है. हम्म. अभी जैसे मेरा मुनीम, हम्म. मुनीम, सो मु इस छोटी आवाज एंड वाह. नीम इस बड़ी आवाज. अब देखिए, हजारों खा, हा इस छोटी आवाज, जा इस बड़ी आवाज,
रो इज बड़ी आवाज, खा इज बड़ी आवाज, Wow, हजार amazing. ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत। अब देखो, हजारों, जा, अगर पहले ही देखें जा, इसके पैरेलल नीचे लाइन में बहुत, ह, वो, साउंड, छोटी छोटी आवाज नीचे, दिस इज कॉल्ड उरूज, दिस इज मैथमेटिक्स। ओके, या बट वो ये सब जानते थे और फिर लिखते थे कि ये इंस्टिंक्ट, क्योंकि ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ तो आई एम ब्लोन अवे. आई वाज जस्ट अवेयर ऑफ हाइकू लाइक विद कॉन्सोनेंट्स एंड स्टफ, बट नाउ दिस आल्सो हैज कंप्लीट मैथमेटिक्स. correct. So that's the thing. When you read a lot of literature, when you watch a lot of films, you understand camera angles. आपको मालूम है वाइड एंगल क्या है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को पता ही नहीं है, कोई मैं अपने डीओपी को बोलूंगा, ब्रो मुझे वाइड एंगल चाहिए या मेरे को टेली चाहिए, अगर उसको लैंग्वेज ही नहीं पता है तो वो क्या करेगा. But if he has read it, if he has understood it, he has given years and years of experience into it, he knows it. Similarly, if somebody wants to understand this art form, he will figure it out. But the thing is, sometimes they don't tell you how to crack it. Kedar, don't tell you how to crack it. It's like I kind of did how to crack it, but I didn't in this conversation. But how do you crack it? That's where that's where I was hustling to learn, and when I figured it out, I just wanted to make sure that जितना वक्त मुझे ये डिकोड करने में लगा, और जो मुझे एक इंसान ढूंढने में लगा कि जो मुझे ये डिकोड करके देगा, शायद किसी को मैं जल्दी बता दूं, यार ऐसे डिकोड कर सकते हैं. तो ये सारे ये रूल है. अब आते हैं इसको तोड़ने में. अगर आपको गजल लिखनी है तो गजल आपको रूल में लिखनी ही लिखनी है, लेकिन कोई किसी ने आपको ये नहीं कहा है कि आपने अपने ख्यालों का इजहार गजल में ही करना है. आप नसर में भी कर सकते हैं, आप नज्म भी पढ़ सकते नज़म हैं, में कर सकते हो. है ना. क्योंकि गजल में आपको रूल्स फॉलो करने हैं. ठीक है. एक it's like if you're in music, you're playing 4x4, you have to play 4x4. या. You 4x4 क्या है कि तुम 6-8 नहीं कर सकते. If you're 6 and 6/8, you are 6/8. अब अगर एक चीज पकड़ा, उसको पकड़ के आगे बढ़ो, और उसमें आप कहते क्या हो वो डिफाइन करता है. ये होता है टेंजिबल, ये सारी टेंजिबल चीजें हैं. लेकिन असली माल जो है इसमें, मादा जो है, वो मेरा मानना है वो आर्टिस्ट के पास दो बड़ी चीज होती है. दो बड़ी चीज, मतलब हर एक आर्टिस्ट के पास, वो जाने अनजाने में कभी कभार इस दरवाजे से गुजरा ही हो. And these two doors, I feel, are majazi and hakiki. Always. Majazi. Like if you can help me explain the words also. No, of course, if you have, please go ahead. Yeah. No, please, like majazi and hakiki, like what do they mean also? No, I'm saying if you have anything to add, आप add कर सकते हैं बिल्कुल. नहीं, मैं गेस करने वाला था. हकीकी is close to hakikat, which is reality, Okay. and majazi is, I don't know, maybe some spiritual calling or quest or something like that. I don't know whether I'm close or not, but yeah, please go ahead. No, you're there. You are in the. आप दायरे में हैं, उसी दायरे में हैं आप ऐसे. तो बहरहाल बात यह है कि मजाजी जो है ना, मजाजी means love for the things that have been created by the creator. For example, love for the beloved, love for BMW, love for the world, the worldly love for pancakes, love for faluda, love for chicken biryani, love for house, love for tangible things, or some achievements that you have in the world. Okay. And ishq hakiki जो है, ishq hakiki is love for the creator, the divine, the source of it all. Okay. But the thing is, the doorway of reaching ishq hakiki mostly
मोस्टली होता है फ्रॉम द डोर ऑफ इश्क मजाजी। जब सारी दुनिया की चीजें चख लेते हो ना, तो आपको समझ आता है बाबा ये है या ये नहीं है। वो कहते हैं ना कि वो मैं हमेशा कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, दो चीज एक ही चीज है लेकिन दो तरीके का परसेप्शन है, एक है नफस और दूसरा है नफस। ठीक है। मीन्स वो तो जैसे मॉन्क कहते हैं कि आप इफ यू कंट्रोल इट यू विल अचीव निर्वाणा, as in you control your desires, like your hunger, you'll reach nirvana, you'll achieve that higher state of spiritual being. But at the same, if you don't have desire, if you don't have that ego, what is your being? Understand? If I'm just quoting a small example right now, for example, Elon Musk को आप देखिए, अगर उसको वो नफ्स नहीं होती, ego and hunger to reach, he wouldn't be Elon Musk. That wouldn't be his being, or Shah Rukh Khan, or something else. Or if he would have given, like Buddha, he gave up. Yeah. He achieved that nirvana. So, ye ya wo, the choice is always yours. I come back to the concept of choice because I feel that's the most beautiful thing. How you react to things. You might choose to abuse me or slap me, but how do I choose to react back? And that comes with training. That is where in schools, teachers and principals and everybody have to teach the kids how to handle choices, how to make choices, how to be okay by not being okay. Yeah. No, it resonates with me multiple levels because I've done vipassana. उसमें भी like एक concept ऐसा है कि you just observe, like वही बुद्धा का ये concept है कि आपको पैर में खुजली हो रही है या पीठ दर्द हो रही है, आप just observe करें without reacting, and that gives you power to know when to react and when not to react. And obviously at least that's the aim, but it's a, जैसे आपने कहा कि बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है. बहुत विपासना है। 10 दिन का, so sorry, 10 दिन का विपासना किया था आपने? हाँ 10 दिन का. सो मुनीम, मैं लाइक एक सर्कल बैक करना चाहूंगा. जो हमने स्टार्टिंग में लाइक थोड़ा सा आपने बताया था कि गालिब बीकेसी वाला जो किस्सा था, उसमें मुझे लाइक ये सवाल मैंने मानव कौल जी से भी पूछा था कि लाइक is an artist or especially a poet, when you like read a little bit of poetry also, you'll see that there are poets who give like a very profound sort of insight, or at least sometimes very mundane but very very maybe like a very different perspective to the mundane also. So is there any prerequisite to become a poet? I mean, is there like the exact question which I asked Manav Kaul is that does a poet have to be in pain always, or at least seeking pain? तो उनका आंसर तो वैसा नहीं था, बट ऑब्वियसली आपका पर्सपेक्टिव जानना है कि ये जो राइटिंग होती है ये टिपिकली इंस्टिंक्टिव होती है. हाँ, ट्रेनिंग है, बट आफ्टर सर्टेन लेवल इट्स ऑलमोस्ट वेरी नेचुरल, राइट? और मैंने खुद ने जो 2-3 ऐसी मतलब शेर ट्राई किए थे, वो एक्सट्रीम पेन में ही थे कि यार ये क्या हो रहा है, एंड लाइक तो आपका क्या लाइक टेक है उसके ऊपर? I think any the prerequisite, I would say the prerequisite of any art form, or being a poet, or like or a musician or any artist, I think I would like to divide into two things. One is his 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 comfort or her comfort in wanting to express herself and himself in that. That is a prerequisite for a poet to, or an artist to have that prerequisite. Number one. Number two, as an artist, you have to acquire one of the biggest things, I think, that is experience. Experience of making mistakes, experience of doing things, experience of riyaz,
जिसको कहते हैं, मतलब जैसे आप अगर हिंदुस्तानी क्लासिकल भी सुनते होंगे तो कहते हैं कि तैयार हो जाओ, अभी तुम्हारी तैयारी हम्म चालू, तैयार होने में भी, पकने में भी वक्त लगेगा, ठीक है। तो अब पकने में वक्त लगने के चक्कर में क्या होता है कि वहां पे जो होता है ना, प्यूरिस्ट के मामले आ जाते हैं, बोलते हैं कि जब तक मैं तैयार नहीं होगा मैं तब तक नहीं करूंगा। लेकिन वही स्कैम, हम्म दैट इज द स्कैम। बिकॉज मैंने नहीं कहा है, ये बड़े बड़े लोग कहते हैं कि इट इज नॉट द डेस्टिनेशन, इट्स द जर्नी। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, केदार टुडे डिसाइडेड that he wants to be an artist. He's an artist if he हम्म decides. Now, what is the tangibility of it? Ki how many people is Kedar sharing it with? One today, or maybe 15 lakh people 10 years down the line. That journey from one person to 15 lakh is time. हम्म It's a constant of time. आप समझ यस, रहे हैं? बिल्कुल And बिल्कुल। वो आपके हाथ में है भी और नहीं भी है। आप इस 15 साल में क्या करेंगे वो आप तक है। हम्म आप समझ रहे हैं? अब मैं बैठ के डिसाइड करता हूं कि मैं, आई रिमेम्बर रीडिंग दिस बुक कॉल्ड एटॉमिक हैबिट्स। उसमें एक हम्म दफा एक जगह कहता है वो आदमी कि कहता है कि एक दो रोजे। शख्स, दो शख्स से कहा कि मतलब अबाउट स्मोकिंग का कहा कि हम्म वो कहा कि यू वांट टू हैव, two people are trying to quit smoking and both are offered cigarettes after that. One says कि no, I'm trying to quit smoking. ठीक है, सामने वाला बोलता है ठीक है यार कोई बात नहीं, ट्राई ट्राई अच्छी बात है। दूसरा वाला बंदा बोलता है कि नो, आई एम ए नॉन स्मोकर। ठीक है, गुड। तो उसे उसे डिसाइड कर लिया। दैट इज वेयर द फिलोसफीज, दैट इज वेयर यू, इफ यू रीड दीज ग्रेट माइंड्स, मोहम्मद अली, अपने क्या बोलते हैं इसको, स्टीव जॉब्स, विराट कोहली, सचिन, you know, these greats, even before they have reached that thing, in their mind they are that thing. And some people have it difficult, some people have it naturally, some people have it difficult, some people have to train to think like that. Like Muhammad Ali would you know, like आउट एक syndrome, सेम जो आपने बताया वही मोहम्मद अली स्टेज पे ही बोलता था कि आई लाइक उनका I am, कोट भी है कि I'm greatest, I am going to tell you how great I am. In fact, there's a syndrome of in psychology में एक syndrome है which is called Muhammad Ali syndrome, which says that वो इंसान कहता है कि आई एम द ग्रेटेस्ट बट एक्चुअली ही इज नॉट। मतलब ही हैज दिस नार्सिसिस्टिक व्यू अबाउट हिमसेल्फ, देयर इज दिस सिंड्रोम प्रॉपर ऐसा। बहरहाल मैं कहता हूं कि कुछ लोगों को ये एक्वायर करनी पड़ती है चीजें, कुछ लोगों को नहीं करती, कुछ नेचुरल होता है। बट द पॉइंट इज कि हमें डर लगने लगता है कि वी ऑफ्टन end up not doing things because either we don't want to make decisions for us, we want universe to make decisions for us, which is okay, which is great. Two, we are scared to fail. yeah, this is one of the biggest one. We scared to fail. And imagine what magic would happen if you and universe decides to take this decision together. Imagine. Then Virat Kohli, Sachin, amazing things are possible. And that's where I think मैं हमेशा कहता हूं कि allow yourself to be to be nothing and to be everything. And I always end uh, my concert or my things with a line which I say that तुम्हें मालूम नहीं तुम कौन हो, तुम कैद नहीं जो इजाजत लो। वाह। So we don't have to take permission to be ourselves. It could be you wanting to go for a movie, you know, it could be you wanting to spend time with your beloved. It starts happening when your decision making or your needs and your wants and your desires interfere. For them to be fulfilled, you need others around it. अभी जैसे relationships है ना,
मैं जैसा सोचता हूँ ये जरूरी है जैसा मैं सोच रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि सामने वाला भी मेरे को वैसे रिस्पॉन्ड करे। लेकिन कितनी खूबसूरत बात होती कि आई एम एट अ प्लेस वेयर आई जस्ट शेयर, सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, बट वो तो स्कैम है ना दोस्त। इसलिए हम इंसान इसलिए हम इंसान बट आप जो बोल रहे हो वो मतलब मुझे समझ में आ रहा है कुछ हद तक, मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, बट ये तो एक एक जन लाइक आई नो दैट्स व्हाई द फर्स्ट क्वेश्चन वाज देयर कि यू कांट डीकपल द पोएट एंड द पोएट्री, बट पोएट्री के लिए कोई खास बात हो सकती है? बिकॉज मैंने खासकर देखा है 2 या 3 बड़े पैटर्न जहां पे इवन हम कागज नहीं दिखाएंगे, इट्स केयर्ड the authorities, or there's some power to those words and they must be coming from somewhere. In that context I'm saying कि कुछ prerequisite होता है, extra sensitive होते हैं, observant होते हैं शब्दों के, and I don't know if it's the right question so also. It so just like so 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 let me तो मैं let me put it in couple of lines which is सब शायर है, बातिन कुछ कुछ जाहिर है। सब शायर, in you know what batin means? no, unfortunately no, sorry. Batin means inside, okay? Zahir means Yeah, visible. just like अब एक दफा मैं फिर से बोलता हूँ, वाह। सब शायर, बातिन कुछ कुछ जाहिर है। सब शायर है। अब ये क्या बात। बातिन से जाहिर का जो मामला है, ये फासला जो है, ये तुम तय करने के लिए तैयार हो कि नहीं, मेरे ख्याल से वो प्री रिक्विजिट है। वाह सब वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शांत हो गया दिला ये आंसर सुन के। Yeah, ये it's a truly आप satisfying ये चॉइस, answer. आपके पास ये चॉइस है, आपकी अम्मी का, आपकी बेगम का, किसी का भी बर्थडे है, आप उनको खत लिखे, या सुबह किचन पे या कहीं पे भी, या उनका हाथ पकड़े, या उनको गुलाब दे, कुछ ना कहे, ये आपकी चॉइस है। दैट्स अ जर्नी दैट यू हैव टू मेक। Beautiful. Cool. Yeah, I think we have summed up like it really beautiful. It's going to take some while to absorb it more and like just imagine it further. But दो last sort of सवाल है, एक थोड़ा सा tactical है और एक gently again philosophical. I'll just continue the philosophy thread. जब मैंने कहा कि हम कागज नहीं दिखाएंगे तो वरुण ग्रोवर की लाइन थी, और वरुण ग्रोवर के साथ भी इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने कहा था कि जब पोएट्री लिख रहे हैं या कुछ फॉर्म ऑफ आर्ट क्रिएट हो रहा है, तो हमारे कुछ स्कूल्स में ऐसे सिखाया जाता है कि एग्जाइल में जाना पड़ता है, और कहीं और जाके लिखना पड़ता है शांत में, ये जब कहानियां सुनते रहते हैं एज अ लेमैन, तो उन्होंने काफी अच्छा मंटो का कहा था कि मंटो वाज सिटिंग इन द मेस एंड राइटिंग अबाउट द मेस, सो इट्स नॉट कि तुम कहीं और जाके लिख रहे हो, राइट? बट at the same time few artists have done like amazing work while they were in exile. तो ये क्या प्रोसेस रहती है रिकंसिलेशन की, राइट? अगर एक आर्टिस्ट अपनी दुनिया में है और अपने अपने ख्यालों में है, एक उसका जैसे नार्सिसिस्ट सॉर्ट ऑफ बिहेवियर है, तो एक एक खुद का वर्ल्ड व्यू बन जाता है और उसी में ट्रिप होते रहते हैं, राइट? तो उससे ये रियलिटी का फासला कैसे तय होता है, या होता ही नहीं है, या वो और ये दोनों एक पैरेलल यूनिवर्स है जहां पे there is a reality? I don't know, I'm just rambling right now, but I think you got the drift, right? I believe so. I believe so. I want to believe so because I have a thought around it. Let's just say कि the fact that artist meets art, that union, artist meets art, and it becomes, it happens, वो चीज जाहिर होती है, वो मौजूद होती है। तो let's just say we call this for now, right now, let's call that wasl. Okay, wasl is a lafz which is called union, meeting, okay? and and which is, आपने हमेशा सुना होगा वसल की रात, सुना होगा द नाइट ऑफ यूनियन, द ऑफ मीटिंग, एंड वगैरह वगैरह, ठीक है? अब इसमें दो फिलॉसफीज देखते हैं, एक आर्टिस्ट के बारे में और आर्ट का।
ठीक है। एक है वसल की रात नसीब वालों को नसीब नहीं होती, एक थॉट प्रोसेस। ठीक है। दूसरा थॉट प्रोसेस है, या तो फिर वसल की शर्त ना हो मोहब्बत में, या तो फिर कोई मजनू ना हो। ठीक है। तो अब मैं ऐसा ये व्हाई एम आई सेइंग दिस, कि फॉर एग्जांपल वस्ल की रात नसीब वालों को नसीब नहीं होती, उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपने आर्ट क्रिएट कर लिया, उसके बाद क्या? हो गया। आपकी बुक मिट गई ना। हम्म। वाह वाह वाह। आपकी बुक मिट गई, तो देन यू हैव टू फाइंड समथिंग एल्स, सम न्यू वस्ल, यू नो। उस कम से कम उस सर्कल में तो बुक मिट गई। हम्म। इसीलिए वस्ल की रात नसीब वालों को नसीब नहीं होती, कि तुम यू सीकिंग दैट, यू हंटिंग फॉर दैट। वन थॉट। ऑपोजिट थॉट, वस्ल की रात के ये इसका ऑपोजिट, या तो फिर वस्ल की शर्त ना हो मोहब्बत में, या तो फिर कोई मजनू ना हो। क्या अमेजिंग है ये। मतलब अब, मतलब लाइक शर्त ना हो, नहीं होनी चाहिए, या अगर हो तो यार कोई मजनू जैसा पागल नहीं होना चाहिए। हम्म। तो अब ये दो अलग चीजें हैं। अब आप अपनी म्यूज को कहाँ तलाशते हैं, उसको टैक्टिकली भी आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो भी आप तक है। यू कैन डू टैक्टिकली, यू कैन maybe have a room which has a nice dim light. Some people have use a little bit of intoxications, maybe dim the lights, maybe go seashore, maybe go on a mountain. Everybody has a different process. Everybody. Some people run. I love running. I just love running. Doing something uh, exercising and running it out makes me think straight. If I'm Sometimes I've written one of the most intense stuff and thought about inter stuff while I'm doing a 10K run. हम्म। हम्म। That's how it is. Everybody is different. So when you and as you grow, you define, you figure out ki what is your muse. So what you're talking about कि कैसे किया जाए वो, that muse, you will eventually figure out कि मेरा muse ये है, मेरा ये मामला है, ये मेरा मामला है। यार मुझे वो जो आपने आपने शायद आपके एक स्टैंड अप में बोला था, एज इन लाइक पोएट्री की, इसमें आइंस्टाइन की लाइन है, इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड, इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली, यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट इनफ। आई थिंक आपकी बातों से कुछ बहुत ही लॉफ्टी फिलोसॉफी, बहुत सहज थॉट से आ रहे हैं। या इट्स जस्ट अमेजिंग। Okay, so I'll conclude with one last question, which is kind of little tactical, in like more sort of not no very lofty. Is that आपने इनफैक्ट ये एक दो आर्टिकल में लिखा था या कहीं पे पढ़ा था मैंने कि ये जो कश्मीरी लैंग्वेज है जिसमें आप ज्यादातर आर्ट बयान करते हैं, हैज गॉट अ लिरिकल quality to the words itself. They feel sort of little musical. So and plus obviously your compositions, I've not gone through the entire body of work, but yeah, they are soothing, they're melodious. Yes, there's some dark undercurrent sometimes. Can you talk a little bit about like the language itself, the words? uh is there any different significance? मेरा एक वन ऑफ द रीडिंग्स में मैंने जाना था कि बहुत जगह पे ये जो ये जो थोड़ा सा अरेबिक और ये वाला जो इन्फ्लुएंस है, ये काफी रोमांटिक लगता था, क्योंकि जो किंग्स होते थे उनको भी स्टोरी टेलिंग में ज्यादा ग्लोरीफाई, ज्यादा फ्लावरी बनाने की कोशिश की जाती थी। ऐसे एक स्कूल मैंने सुना है, बट आपके पास ऑब्वियसली डेफिनेटली डिफरेंट इनसाइट्स होंगे। सो एनीथिंग दैट यू कैन टॉक अबाउट द लैंग्वेज दैट यू सॉर्ट ऑफ रिसाइट इन एंड परफॉर्म इन, एंड क्या है Okay. ये? So let me. So there is a word called in Kashmiri. There is a word called korkun. Okay, korkun, which means which way. Okay, Sorry, which it or means? which means literally means which way. Korkun, kis or. अच्छा अच्छा। Okay, which. So let me just read this to you. हाँ मैं पृथ्ना दरमियानस कोरकुन,
Dutchen hover yirba abas korkun. Eine gutat handan chui mei vite. Thap dimha aftabas korkun. Yel marun chum vaktavaitem sandnam. Chusburomut bront kalas korkun. Chusna earlim hun zolum har pahar. टस्न कर रहा हर सवाल स्कोर को सफेद कागजन पुरस्नाम बुकुस अलिफ क्या कैर गर दुप मसहर कलामस कोर कुन हाँ मैं पुरस्ना दरमियानस कोर कुन दक्षिण होवर यिरब आबस कोर कुन द फर्स्ट कपलेट हाँ मैं पुरस्ना दरमियानस कोर कुन I asked the midway which way should I go Dutchin hover yirba abas korkun, and it replied whether you go left or you go right, you'll be in a whirlpool. But which way? This side of life or that side of life? Any gota thandan chi mei vaite. It feels like darkness is seeking and running after me in narrow lanes. Thap vidimha aftabas korkun. I wish I could just grope and hold on to this ray of sun, but which way? This side of life or that side of life? Yeni marunchum vaktavaitam sandnam. जब मेरा मरने का वक्त आएगा, when it's time for me to die, they'll come and look for me. They will come and want to find me. Chusburomot bront kalas korkun, but don't they know I'm lost long ago? But which way? This side of life or that side of life? Wow. हुस्न आलिम खून जोलुम हर पहर मुझे मालूम है आई नो मैं आलिम नहीं हूँ लेकिन मैंने अपने खून को तवे में जलाया है जैसे तेल उगा तलते हैं वैसे मैंने तला है हुस्न आलिम खून जोलुम हर पहर आई नो आई एम नॉट a purist I am not alim I'm not one of the like learned person but I have burnt my blood in a pan टस्न कर रहा हर सवाल स्कोर कुन I wish I would make fun of every question that comes my way but which way this side or that side सफेद कागजन पुरस्नम बुकुस अलिफ क्या white paper asked me what am I and what is alif सफेद कागजन पुरस्नम बुकुस अलिफ क्या कर गर दुपमस हर कलामस स्कोर कुन and I replied it is an artisan of every art but which way this side or that side so Beautiful. the ring of language is a ring of a language there is no way that ring can be explained when you think in a language that is not that language that you're thinking in if I want to think in English for example who do I want to be I want to belong that's the line that I want to say and I want to belong I want okay but if I convert this मैं होना चाहता हूँ उसका अलग रिंग होगा कश्मीरी में उसका कुछ अलग होगा सो जिस लैंग्वेज में आप सोचते हैं उसमें एक्सप्रेस करना मेरे ख्याल से बहुत आसान हो जाता है बहुत आसान होता है और जो नेचुरली आप जिसमें एक्सप्रेस करना चाहेंगे बीट इंग्लिश हिंदुस्तानी और उर्दू और कश्मीरी और गुजराती और लाइक मलयालम और एनीथिंग दैट्स गुड and sometimes you don't have to know that language also if somebody just teaches you a couple of words and then you make sense of it and blah 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 and then you want to explore maybe that is for you so you have this like I said safed kagzan prusnam bukus alif ka you just like a white paper and everything that you create is the creator of itself but which way this way or that way Amazing. I think what I gather from this entire conversation is that there is you are like few of
the leading sort of artists in the country who are let me complete, who are sort of are talking about choice, talking about agency, talking about there are no barriers, there are talking about it, just that you have to really sort of arrive at what you want to say. The medium, the format, everything can be explored whichever way is comfortable. मैं कहीं इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ कि मैं झंडा ले रखा है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मुझे मालूम है कि मैं किस पैमाने पे हूँ. मैं सिंपल एग्जांपल कहूँ कि मुझे पता है जब मेरे वर्ड्स मेरे कम पड़ जाते हैं मैं उसको कंपोज कर लेता हूँ. जब मेरी कॉम्पोजिशन कम पड़ जाती है मैं उसको गा लेता हूँ. जब मेरे गायकी कम पड़ जाती है तो मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, तो सो दैट आई कैन शो इट विजुअल फॉर्मेट में. The videos that I've directed for Alif, the script that I've written for Alif, be it Siyah Hal or Dilgir or Malal or Hosha, the visual aspect of it is something that I cannot express in words. And the words aspect of it is what I could not express visually. So where one thing stops, another thing takes it forward. तो मैं नहीं कह रहा हूं कि मैंने ये झंडा उखाड़ के रखा है ऐसे. I aspire to be inspired. That's my number one. I want to, each day when I want to get up, I want to be inspired to pick up my guitar and do my riyaz game. The day I feel that I don't want to feel wanting to pick up my guitar and like do riyaz, I even force myself that day that no, that is the day I have to maybe do 5 minutes more extra. अब समझ रहे हो ना, आसान नहीं हो रहा है. जब मजे आ रहे हैं तुम्हें तब तुम मजे करोगे तो क्या है, जब मजे नहीं आ रहे तब करो ना वो, तब तुम्हारी शिद्दत और पैशन समझ आएगा ना. करेक्ट. ये इतनी जेम ऑफ एडवाइस है एंड यू आर्टिकुलेटेड ब्यूटिफुली. ये बहुत बहुत टफ है ये जो है ना, जो आपने कहा कि जो जिस दिन नहीं करना है उस दिन भी करना पड़ता है. तो अगर आपने ये रास्ता इख्तियार किया है, अगर आपने ये इख्तियार किया है, हाँ, अगर आप कुछ और होना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप दरिया होना चाहते हैं, तो फिर आप कंप्लेंट नहीं कर सकते कि आप रियाज भी ना करें और आपको वो चीज मिले भी. थोड़ा ट्रिकी है. अब अगर मिलेगी भी तो बाद में आप उसको मतलब कितनी देर तक अपने पास रखें, क्योंकि अगर आप किसी चीज को एस्पायर करते हैं तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो वो चीज मिल जाती है, कब तक उसको अपने पास रखोगे, उसका भी अलग आर्ट फॉर्म है. Yeah, I remember one quote which I think this guy called Albert Ellis, I think उन्होंने कहा था कि I mean every choice has a price. तो yeah, you have to. Yeah, I think that's absolutely correct. Yeah. हमारे मैं हमेशा कहता हूँ कि let me just leave if people are listening and still manage to listen this far our impressions, I leave them with a couple of lines. अब के शामिल है मुझ में खामोशी, कोई सुनता भी हो तो क्या होगा. मैंने सीखा है खुद से रोजाना, अजनबी ना बनो तो क्या होगा. कोई सुनता भी हो तो क्या होगा. Thank you, my friend. Thank you. That's it. And that's it from today's Gyan session. For show notes and more Gyan, visit audiogyan.com. And if you wish to connect with me, I am at AudioGyan Moments on Instagram. Until then, take care.